Hello and welcome to Strive Defense Dialogue. I'm your host, Brigadier Rakesh Bhatia. And as you see on screen, we have Colonel Rajiv Agarwal with us today. Good evening, Colonel Rajiv, and welcome to Strive Defense Dialogue. Good evening, Brigadier Bhatia. It's always a pleasure to be back with you. Thank you very much. First of all, let me introduce Colonel Rajiv Agarwal. Uh, he's from artillery, who has we were together in MI Directorate, where he started looking into West Asia. That was in 2009. And since then, he's been constantly watching what is happening in the region. And today, he is an expert who is a freelancer. His articles regularly appear in various newspapers and magazines. And we decided that what has happened in Syria, he's probably the best to give us an update. So, with this, we start our today's episode. First of all, before I invite Colonel Rajiv, I will give a very small introduction to the country. Where is it located? What is the geopolitical importance of this country? As you see on the map, Syria has Turkey on the north, Iraq on west, Jordan in the south, and Lebanon and Israel to the southwest. So as you see, this area has been very active of late. There are a lot of things that are happening with Hamas Israel war, Iran supporting Hamas as well as Hezbollah in Lebanon, Iran providing material support to these two countries against Israel. Turkey has its own interest in the nation. So on 8th of December, a very dramatic thing happened. After 53 years, the house of Assad, it just collapsed. Rebels advanced into Damascus. Bashar al-Assad, who was the president or dictator, he fled to Moscow. His legacy was that his regime was brutal and he is accused of heinous crimes against his own countrymen. Ethnic violence, religious strife, they reignited the civil conflict. In fact, from 2011 onwards, Syria has been having a severe civil war also in their country. Now, Syria is a mosaic of people and faiths which are carved out of the Ottoman Empire after World War One. As you see, there is no homogeneity of the population. They have never lived side by side in any stable democracy. And Assad belongs to Alawite minority, which has a population of only 10 to 15%. We will ask Al Rajiv subsequently that how has this also played an important role. But despite being from a minority, how come that he served for more than 50 years? Who was supporting him? Another important thing we want to discuss is that Syria has become a sort of fighting ground for so many countries. First of all, I will now invite Colonel Rajiv to please tell us that which country has what interest in Syria and which are the groups which they are supporting, and proxy wars are being fought for Russia, Iran, Israel, USA. Who all are fighting this war? Over to you, Colonel Rajiv. Thank you, Brigadier Bhatia. And if you could go back to the map which you had shown of Syria, so that will make it slightly better for the viewers. Yeah, this one. So it will make it slightly easier for the viewers to understand when I speak. So this Syria thing which happened, which started on 27th November, it has actually come as a total shock and surprise to not only the Syrian people but to the entire region and the world as such, because it was not on the horizon. And even if skirmishes with the rebels were happening all the time, it was not expected that they will be able to overrun entire north to south about 900 kilometers of territory in mere 11 days and force Assad to leave despite having strong support from its benefactors Russia and Iran. So that was the one which was the most surprising thing. Now coming to the importance about what you elucidated to Brigadier Bhatia, if you see, Syria is a very important country in the region for many reasons. So coming to the geopolitics first,
Iran has been exerting, influence right from its own territory westwards up to the Mediterranean Sea, and for what it calls that it wants a Shiite crescent right up to the Levant. So Levant is the entire territory which goes right up to the Mediterranean Sea, and in that territory, the most important country which becomes a hub and linchpin for anything that Iran has to do is Syria. So if you see the map, Syria, from the north, it is from the east and north, it is surrounding Lebanon. From the south, abutting Jordan and Israel, it is there as far as Israel is concerned, and it also has key ports and access to the Mediterranean Sea. So in terms of the leave the Shiite part of the sectarian part of it. Just from the geopolitical context, it was very important for Iran. If Syria was collaborating with Iran, then Hezbollah was supplied. Hezbollah was trained. Hamas was supplied. Hamas was trained. In the West Bank, Palestinian Islamic Jihad was supplied and trained. And most importantly, Iran was able to inflict cost of peace onto Israel through these proxies without having have the fear of any trouble on its border, because it was sitting pretty at around 1800 kilometers away from the Israeli borders. Now, if Syria is gone, then this important linchpin or the conduit or the link which Iran had to its proxies surrounding Israel is gone. When you join this dot along with the damage that Hamas and Hezbollah has suffered over the last 14 months in terms of their leadership, in terms of their fighting capability, in terms of their military capability, it paints a very grim picture as far as Iran is concerned. So this is the overall situation as far as Iran is concerned. Coming to Turkey, Turkey, as Brigadier Bhatia said, is to the north of Israel, which you can see on the map also. And Turkey has been facing problem from Syria right from the time when Arab Spring protests broke out in 2011. Almost, they estimate that almost 3 million refugees who had escaped the brutal oppression from Assad regime in Syria had escaped to the Turkey, the southern areas of Turkey, and had established camps there. And refugees coming to any country, most of the times it is a nuisance than any help to the host country, and that is what has happened. Plus, toward the north and east side, you see Syrian territories tailing off into a northeast direction, where it joins Turkey to the north and Iraq to the east. This is the area which is a Kurdish dominated area, and there is a Kurdish secessionist movement kind of thing which has been going on for years. And what they are aiming for is a separate autonomous state of Kurdistan, which would have areas of Turkey, Kurdish dominated areas of Turkey, Kurdish dominated areas of Syria, as well as Iraq. And because of this, the Kurdish rebels who had taken firm base in the northern territory of Syria along the borders of Turkey, they have been creating trouble in Turkey for a long time. So for Turkey, it was a twin problem. One was the problem of refugees, and second was the Kurdish rebels who were creating a problem of peace as far as Turkey was concerned. And to be fair to Turkey, it had been insisting on Assad that there should be some amount of reasonable talks and dialogue so that this problem is sorted out. But Assad was adamant that till the time Turkish troops get out of the territory bordering Syria, there cannot be any talk. So Turkey had this problem. For Israel, which we know has been an illegal annexation of Golan Heights since 1981, which is part of Lebanon and jutting into Syria. This was a golden opportunity because all the trouble that Iran could do had to come through Syria. So if Syria goes down, there cannot be any better news for Israel. And that is how you see that now Israel is taking full advantage of this situation. They have carried out, 300, 500, I don't know how many airstrikes, and they have eliminated the entire military capability of Syria. They have destroyed all the aircraft, they have destroyed all their warships, weapon depots, and you name whatever. Plus, even suspected chemical weapon depots and sites or so Israel. Plus it has encroached upon the even the demilitarized zone which is beyond the Golan Heights and entering into Syria. And now, as per reports, they are almost 25-30 kilometers short of Damascus. So Israel is trying to create a buffer zone between Syria and itself.
Turkey is advancing from the north and trying to take over as much territory as it can to again create a buffer zone between itself and Syria for any future threat. The Kurdish rebels are trying to take advantage and create as much, territory that they can to have a safe and independent territory of Kurdish dominated area. And so you see, Syria has been encroached from all three sides. Now, how Abu Muhammad Jolani, along with his HTS, which has now come in power, will be able to firstly stabilize Syria, get into a system of Syria of governance and rule, because there is no political parties, there is no political system in Syria since it was governed by ruled by Assad family for last 50 odd years. And how and if they will ensure that Syria does not get fragmented is going to be a very, very big challenge for them. Absolutely. Now, you see, as you have said, that everybody seems to be taking advantage of the situation in North, Central, and all. I think I have a slide to show this. Basically, summing up what you have said. Now, for our viewers, ये जो नॉर्थ सीरिया के अंदर है, ये टर्की अभी एकदम लॉलेसनेस है भाई, और टर्की के अपने प्रॉक्सीज वहां पर आर रोमिंग अराउंड इन दैट एरिया. तो ये व्हाई आई हैव स्विच्ड ओवर टू हिंदी. कल राजीव के वी गॉट अ रिक्वेस्ट दैट हमको हिंदी में बात करनी है, तो इसलिए आई हैव सडनली स्विच्ड ओवर टू हिंदी. तो इसमें क्या आपको ये दिखता है कि टर्की को ओवरऑल एडवांटेज है? बाद में हम बात करेंगे, बिकॉज वी आर येट टू टॉक अबाउट द यूएसए, द रशियन एडवांटेजेस. बट इसको यहीं पे अगर हम तीन कंट्रीज के बारे में बात करते, तो क्या आपको लगता है कि ये सबसे ज्यादा एडवांटेज इसमें टर्की को होने वाली है लॉलेसनेस की, टू कर्ब कर्दिश मूवमेंट? सी ब्रिगेडियर भाटिया, इसको इतना सिंपली और सेगमेंटेड तरीके से देखना थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज जैसे मैंने बताया, टर्की जो है चाहता है कि उसके और सीरिया के बीच में एक सेफ बफर जोन बन जाए 25 से 30 किलोमीटर तक का, ताकि उसकी टेरिटरी पे जो हमले हो रहे थे वो ना हो. मजेदार बात यह है कि जो तीन ग्रुप्स ने मिलकर और मोस्ट प्रॉब्ली टर्की के सपोर्ट और कहने पे जो हमला किया है सीरिया पे, वो है एचटीएस जो जुलानी वाली है, जो अल नुसरा का नया अवतार है. फिर है आपकी फ्री सीरियन आर्मी, जिसको कि टर्की ने ट्रेन, सपोर्ट और इक्विप किया है. और तीसरी है बहुत ही मजेदार, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस एसडीएफ, जो कि एक्चुअली कुर्दिश रेबल्स के फोर्सेस हैं, और पिछले कुछ सालों से वो फ्री सीरियन आर्मी और टर्की के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं कुर्दिश एरिया में कंट्रोल के लिए. बट क्योंकि उनका दुश्मन या उनकी लड़ाई एक थी, तो उन तीनों ने मिलके इस प्रकार जो है ये किया था. सो टर्की के लिए वो एडवांटेज उठाना चाह रहे हैं कि भाई वो एक बफर जोन और एक पूरी बेल्ट अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर बन जाए. बट क्या इस इनिशियल विक्ट्री के बाद फ्री सीरियन आर्मी, टर्किश आर्म फोर्सेस और सीरियन जो कुर्दिश फोर्सेस हैं, उनके बीच में समझौता होगा, या पहले की तरह लड़ाई चलती रहेगी और क्लैशेस चलते रहेंगे? ये देखने वाली बात है, क्योंकि अभी भी आज की तारीख में भी जो एसडीएफ है और जो फ्री सीरियन आर्मी है और टर्किश आर्म फोर्सेस के बीच में लोकल क्लैशेस चल रहे हैं फॉर कंट्रोल ऑफ टेरिटरी. Absolutely correct. See, if you see the model which is happening, कल राजीव, तो ये एक स्लाइड आप देखिए. इसके अंदर मैंने कोशिश की है कि ये जितने भी एक्टर यहाँ पे हमने अभी तक बात की है, इनका दूसरे ग्रुप के साथ क्या रोल है, किस तरह से जहां थम्स अप है, आप देखिए हर कोई एक दूसरे के अगेंस्ट है. Would you spend some time on explaining this a bit before we go back to the original discussion? थैंक यू ब्रिगेडियर भाटिया. ये मेरे को लगता है आपने एक इंडिपेंडेंटली और बहुत ही मेहनत वाला काम किया है, जो ये चार्ट बनाया है. और इंटरनेट पे, ट्विटर पे बहुत सारे ऐसे चार्ट्स और ग्राफिक्स घूम रहे हैं, जिसमें कि जो एक मोटिव समझने वाली बात यह है, वो ये है कि विभिन्न ग्रुप जो यहाँ पे हैं इस समय सीरिया में जो ऑपरेट कर रहे हैं, वो कुछ मुद्दों में एक दूसरे के साथ हैं और कुछ मुद्दों में एक दूसरे के खिलाफ हैं. दूसरा, जो बड़े पावर्स हैं, चाहे यूएस हो गया, रशिया हो गया, टर्की हो गया, वो किसी ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं और किसी ग्रुप को अपोज कर रहे हैं. बट ये जरूरी नहीं है कि जिसको वो सपोर्ट कर रहे हैं वो बाकी ग्रुप्स भी आपस में सपोर्टिव हों, वो आपस में क्लैश भी कर सकते हैं. तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था व्यूअर्स के समझने के लिए,
कि जब ये सीरिया पे 27 नवंबर को एक कॉम्बाइंड असॉल्ट लॉन्च हुआ, तो उसमें फ्री सीरियन आर्मी थी और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस भी थे। ये दोनों जो है असाद को हटाने के लिए साथ में थे, बट वैसे जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट है, बिकॉज नॉर्थ में जो टर्किश सीरिया बॉर्डर पे दोनों को इंडिपेंडेंट कंट्रोल चाहिए। सिमिलरली टर्की ने फ्री सीरियन आर्मी को ट्रेन किया है, बट यूएस ने भी फ्री सीरियन आर्मी को सपोर्ट किया है। बट जहां तक फ्री सीरियन आर्मी का सवाल है, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल आइडियोलॉजिकल सपोर्ट, उसमें वो टर्की और यूएस उसके साथ नहीं है। सो ये एक बहुत तगड़ी खिचड़ी बनी हुई है, जिसमें आइडियोलॉजी अलग है, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट अलग हैं और लोकल इंटरेस्ट अलग हैं। तो हर एब्सोल्युटली। ग्रुप और हर नेशन अलग अलग मुद्दे पे अलग अलग पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, और इसलिए आपको ये इस तरह का ये चार्ट दिख रहा है जो कि ब्रिगेडियर भाटिया ने बनाया। नहीं, एक्चुअली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैं ये चार्ट बना रहा था तो कई बार मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि इज इट ए थम्स अप और इज इट ए क्रॉस, बिकॉज इतनी सारे फैक्टर्स हैं उसके अंदर कि ये एक्चुअली एक्यूरेट नहीं है। लेकिन फिर भी मोटा मोटा समझने के लिए व्हाई आई वाज इंसिस्टिंग कि इट इज प्रॉक्सीज, जो बाहर की कंट्रीज से सपोर्ट मिल रहा है, उन्होंने अपने अपने ग्रुप बना रखे हैं। उस अपने ग्रुप का एक और आइडियोलॉजिकल रीजन है, और ये ग्रुप्स और ये एफिलिएशंस कब बनती हैं कब टूटती हैं इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। और क्योंकि इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है, तो पीस लाना भी अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये पीस कैसे लाई जाए। मोर इंपॉर्टेंटली, ये एरिया इस तरह का है कि अगर आप देखिए, अभी हमने रशिया की बात कर रही है। अभी रशिया, असाद अपने असाइलम के लिए सीधा रशिया पहुंचे मॉस्को में, एज पर द इंफॉर्मेशन ही इज देयर। तो ये यूएसए भी वहां पे ऑपरेट कर रहा है और रशिया भी वहां पे ऑपरेट कर रहा है। तो इट इज ए बॉर्डर लाइन टू हैव कंट्रोल ओवर द मिडिल ईस्ट। तो अगर अगर हम ये वेरियस कंट्रीज के बारे में बात करें, तो अगेन you are an expert on the subject. This is what I felt, who's supporting whom, which country is supporting whom, for what reason. I hand over to you to quickly, it may not be absolutely correct, this is my impression about the whole situation, so you please decipher this for us. नहीं, बिल्कुल आपने सही बनाया और काफी मतलब डिटेल में दिख रहा है। बट इस स्लाइड के इन डिटेल्स में जाने के का उतना टाइम और समझ हमारे पास नहीं होगी। मैं एक मोटे तौर पे आपको अगर बताऊं सबको कि जो एचटीएस या अल नुसरा जिसने कि इस समय सीरिया को टेक ओवर किया है, वो किसका एक नया रूप है? वो इस्लामिक स्टेट का नया रूप है। इस्लामिक स्टेट जब 2014 में आया था सीरिया और इराक में, तब उसने एक इस्लामिक कैलिफेट बनाने की कोशिश की थी, राइट फ्रॉम सीरिया अप टू अफगानिस्तान। Correct. उस टाइम टर्की ने भी उसके अगेंस्ट फाइट की है, यूएस ने भी उसके अगेंस्ट फाइट की है, रशिया ने भी उसके अगेंस्ट फाइट की है, ईरान ने भी उसके अगेंस्ट फाइट की है। क्यों? क्योंकि कॉमन एनिमी उस समय था कि एक टेरर नेटवर्क का एक एरिया बढ़ना नहीं चाहिए और उसका कंट्रोल नहीं होना चाहिए। लेकिन अब डिस्पाइट द फैक्ट जब यूएस ने आईएस और अल नुसरा और एचटीएस को एक टेररिस्ट ग्रुप माना हुआ है, अल जुलानी जो अब उनका लीडर है, जिसके ऊपर $10 मिलियन का एक रिवॉर्ड है, उसके बावजूद आप क्या देखते हैं? 28 नवंबर को सीएनएन के स्टूडियो में जाके इंटरव्यू देता है, $10 मिलियन का वो UN, प्राइस टैग होने के UN बावजूद। representative has met him. A यूएन representative from रिप्रेजेंटेटिव UN has gone and had meeting with him. और एचटीएस ने जो सीरिया का टेक ओवर किया है, आज वो यूएस के लिए एक बुरी बात नहीं, क्योंकि आज उसके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट क्या है कि ईरान के लिंक को तोड़ना। सो ये एक बहुत ही फ्लूइड और डायनेमिक सिचुएशन है, जिसमें कि आपके इंटरेस्ट समय और सिचुएशन के हिसाब से बदल रहे हैं, और एक जैसे कहते हैं एक मॉरल स्टैंडिंग, एक आइडियोलॉजिकल जो स्टैंडिंग होती है वो कोई नहीं है। आज आप एचटीएस को सपोर्ट कर रहे हैं, कल अगर एचटीएस अल नुसरा और इस्लामिक कैलिफेट बनाने के में लग जाता है और सीरिया इराक में अगेन 2014 वाली सिचुएशन लाना चाहता है, तो यूएस दोबारा, टर्की दोबारा उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो ये एक इट इज अ टोटल मेस, and there is no ideology, there is no moral, and it is only happening because of short term interest of various players in various countries. Absolutely, I agree with you. Okay, सिमिलरली एक अगर बहुत ईरान का हम देखें, ईरान आज की तारीख में दबाव में है, बिकॉज एचटीएस अल नुसरा फ्रंट
का जो रूप है उसने सीरिया को टेक ओवर किया है। उससे क्या हुआ है, ईरान का जो सपोर्ट था असाद के साथ वो कट गया है। बट आप ऑलरेडी रिपोर्ट्स देख रहे होंगे कि ईरान ने जो है अपने इंटरलोक्यूटर्स भेजने शुरू कर दिए हैं कि वो अब एचटीएस की गवर्नमेंट के साथ किस तरह से वार्तालाप शुरू कर सकता है, किस तरह से उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर सकता है। सो आज ईरान को उसने टॉपल किया है उस, और ईरान उसके अगेंस्ट है। कल अगर उनकी बातचीत शुरू हो जाती है, जैसे कि ईरान ने तालिबान के साथ बातचीत की थी, ईरान ने अफगानिस्तान में सबसे पहले तालिबान के साथ जब 2021 में यूएस छोड़ के चला गया था तो बातचीत शुरू की थी। सुन्नी ग्रुप हमास ईरान को सबसे ज्यादा अपना बड़ा सपोर्टर मानता है, जबकि ईरान एक शिया ग्रुप है। सो इसमें दिस इज ओनली शॉर्ट टर्म एंड जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट which are ruling the roost. There is no ideology and there is no moral. ओके, नो करण, राजीव, अभी हम चलेंगे एक जिसकी हमारे से बात हुई थी कि सीरिया जो है वो रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी जहां पे रशिया अपना इन्फ्लुएंस दिखा रही है। तो अगर सीरिया की जब बात करते हैं तो व्हाट हैज बीन, इज रशिया द बिगेस्ट लूजर व्हेन वी स्पोक? माय क्वेश्चन वाज, इज टर्की द बिगेस्ट गेनर? या क्या आप समझते हैं कि रशिया को सबसे बड़ा धचका लगा है? ये मैप में आपके लिए अपने व्यूअर्स के लिए रखा है जिससे आप समझा सकते हैं कि क्या रशिया के कंट्रोल का इंटरेस्ट था सीरिया में, and how has it been affected because of the change of regime? सो आप सही कह रहे हैं, रशिया के लिए बहुत बड़ा धक्का था। बिकॉज अगर आप इस मैप को देखें ध्यान से तो जो दो डॉट्स दिख रही हैं सीरिया के मैप में मेडिटेरेनियन कोस्ट पे, तार्तुस और खरमेन बेस, वो रशिया के मेन मिलिट्री बेसेस थे इस एरिया में। और हमें सबको मालूम है कि यूएस के बहुत सारे मिलिट्री बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में, बट रशिया का ये अकेला एक आउटपोस्ट था, बेस था, और काफी अच्छे से उन्होंने उसे इक्विप कर रखा था। बिकॉज यहीं से उनका पूरा इन्फ्लुएंस ओवर द एंटायर वेस्ट एशियन रीजन एज ऑल्सो अफ्रीका वाज बीइंग व्हाट यू कॉल डिलीवर्ड। बिकॉज इसके And अलावा and रशिया and के पास southern Europe, the NATO was being handled through एंड this. correct, and how to keep NATO under check in the Mediterranean Sea and southern Europe. So ये, और इसके अलावा रशिया के पास ऊपर तक और कोई भी कोई साधन नहीं बेस है, नहीं। बिकॉज वो पूरा आइसोलेटेड है, लैंड लॉक्ड है। सो ये रशिया के लिए बहुत बड़ा धक्का है। बट अगेन जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के सामने आपकी कोई सही या कोई गलत नहीं होती। जैसे कि पॉलिटिक्स में भी हम कहते हैं कि कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। तो अगेन जो इनपुट्स आ रहे हैं मीडिया में और जिस तरह की बातचीत चल रही है, रशिया के बारे में भी यही हो रहा है कि रशिया भी टॉक्स में है कि किस तरह जुलानी और एचटीएस की जो गवर्नमेंट है वो एक छोटा सा एनक्लेव उसको छोड़ देगा, जिसमें कि रशिया के मिलिट्री बेसेस रिटेन रहेंगे। और ये कोइंसिडेंटली वो इलाका है जहां पे रशिया के दोनों बेसेस हैं, जहां पे आपने पहले बोला था अलवाइट कम्युनिटी का मैक्सिमम कंसंट्रेशन है। अलोंग द मेडिटेरेनियन कोस्ट जो है 10 से 12% जो अलवाइट कम्युनिटी है वो पूरी की पूरी वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ये एक अलग सेक्ट है शिया का, और असाद फैमिली उसी में से था जिसने 50 साल रूल किया। और सुन्नी मेजोरिटी होने के बावजूद उन्होंने जैसे कि सद्दाम हुसैन ने इराक में बाथ पार्टी के थ्रू किया था, इन्होंने यहाँ पे सीरिया में किया था। तो ऐसे कुछ बातें चल रही हैं, सुनने में आ रहा है कि रशिया भी टॉक्स में है कि किस तरह से कोई समझौता किया जाए और किस तरह से उनका जो फुटहोल्ड है एक वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड साउथ यूरोप के लिए, उसको लूज ना किया जाए। बट इन सब में देखना पड़ेगा कि किस तरह से समय के साथ होता है। बट यू आर राइट, रशिया और ईरान के लिए ये सबसे बड़ा धक्का है। असाद तो खैर था ही, वो भाग गया। बट सीरिया और सॉरी ईरान और रशिया के लिए ये सबसे बड़ा धक्का है। ओके, नाउ इनफैक्ट सोशल मीडिया के ऊपर ये जो नेवल बेस है वहां से शिप्स मेंटेनिंग ए सेफर डिस्टेंस फ्रॉम द पोर्ट, उसकी भी फोटोग्राफ्स आई है। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, वो अभी तक ऐसा नहीं पता चला है कि वो अबैंडन हो गया है और दे बीन टोल्ड। आई थिंक द न्यू लीडर will probably, Jolani will probably, like to have good relations with Russia also, क्योंकि all said and done रशिया का यहाँ पर दखल है। रशिया can make things difficult for HTS to rule. Okay. Now my next question is,
मिडिल ईस्ट में और इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर ये उथल पुथल जो चल रही है, द रेडिकलाइजेशन दैट इज गोइंग ऑन, ओल्ड एसोसिएशन, आइसिस, कैलिफेट, अलकायदा, एचटीएस के रिलेशनशिप, और जो बाकी जगहों पर मुस्लिम इस्लामिक रेवोल्यूशंस चल रही हैं, they are taking lot of heart from this thing कि अगर सीरिया में हो सकता है, and as it is, Syria is a very important place for this religion also, historically, as well as a sort of guidance. तो इससे क्या आपको लगता है मुस्लिम ब्रदरहुड, इनफैक्ट देयर इज अ न्यूज कि even Uyghurs and China is concerned about, because there were Uyghurs fighters who are fighting along with certain groups. So at least अगर आप न्यूज़पेपर्स देख रहे हैं, अल जजीरा की रिपोर्ट देख रहे हैं, तो दे आर टॉकिंग अबाउट दैट लॉट ऑफ ग्रुप्स आर टेकिंग लॉट ऑफ हार्ट, और उनको बड़ी एक तरह से प्रेरणा मिल रही है कि वी कैन एक्चुअली डू इट इफ दे कैन डू इट. इसके ऊपर क्या असर होने वाला है? आपको क्या लगता है कि इस रेवोल्यूशन से क्या होगा? हाँ, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तरह तरह की न्यूज आ रही हैं, कुछ फॉल्स होती हैं, कोई प्रोपेगेंडा होती है, बट नॉट विथ स्टैंडिंग एनी स्पेसिफिक न्यूज वेदर ईगोर्स की है या किसी और की है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि इस तरह के जो एक्शन होते हैं जिसमें आप 8 या 10 दिन में एक बनी बनाई सरकार को डाउन कर देते हैं, उससे इस्लामिक स्टेट हो गया, अलकायदा हो गया, और बाकी जो छोटे छोटे सुन्नी शिया मिलिटेंट ग्रुप थे जो कि काफी दबाव में आ गए थे और एक मार्जिन पे चले गए थे, उनको एक उत्साहन मिलता है कि यार अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और इसके बारे में मैं दो चीजें बताना चाहूंगा। पहली बात तो यह कि सीरिया के साउथ और ईस्ट में जहाँ पे अमेरिकन बेसेस हैं और जहाँ इराक के साथ उसकी बॉर्डर ज्वाइन होती है, वहां पे ऑलरेडी रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं कि कुछ ग्रुप्स जो कि छोटे फ्रेगमेंटेड ग्रुप हैं, उन्होंने इकट्ठा होना शुरू कर दिया है और वो भी अपनी एक कंट्रोल वाली टेरिटरी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अलकायदा हो गया या इस्लामिक स्टेट हो गया, वो तो जरूर इस बात से प्रोत्साहन लेने की कोशिश करेंगे, अपने काडर को मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम भी एक तरह से अपनी मूवमेंट को रिवाइव कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने जो अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले जो मैंने लिखा था एनालिसिस, उसमें मैंने यही लिखा था कि जो सीरिया में जो असाद का आउस्टर था वो आसान था, बट अब जो असली चैलेंज है वो है किस तरह से सीरिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाया जा सके और किस तरह से ट्रांजिशन को एक स्मूथ तरीके से किया जा सके, ताकि सीरिया एक दोबारा लीबिया या अफगानिस्तान ना बन जाए, जहां पे सालों साल के बाद भी एक नॉन स्टेट एक्टर गवर्नमेंट को किसी तरह चला रहा है और कोई मैकेनिज्म्स नहीं है, कोई गवर्नेंस नहीं है, और एक कंट्री जिसका कि एक बड़ा रिच इतिहास था वो धीरे धीरे जिसे कहते हैं डूबता जा रहा एब्सोल्युटली. सो अगर हम इसको पोस्ट असाद सीरिया कहें, तो क्या आप कोई यूनिटी गवर्नमेंट देखते हैं? है। अगर एचटीएस जुलानी और जो इनका इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बशीर जो उन्होंने अपॉइंट किया है, जो उन्होंने पहले एक हफ्ते में जिस तरह से उन्होंने सिग्नल्स दिए हैं, अगर वो इस तरह से दे पाएंगे तो हो सकता है किसी तरह की एक गवर्नमेंट आगे आने वाले समय में मिले। बट उसमें भी बहुत जो देखने वाली बात यह है कि वहां पे, जैसे मैंने पहले बोला, कोई पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, तो किस प्रकार से इलेक्शन कराएंगे, कौन खड़ा होगा, कौन सी पार्लियामेंट होगी, उसका कुछ मालूम नहीं है। अगर आप तीनों ग्रुप्स जो मेन ग्रुप्स हैं, सीरियन फ्री सीरियन आर्मी हो गई, एचटीएस हो गई, डेमोक्रेटिक फोर्सेस हो गए, और जो कुर्दिश वाले हैं, और लेकर से आपने अलवाइट्स को भी अगर किसी रूप में ले लिया, तो किस प्रकार से उनको लोगे और कैसे करोगे, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हमने एक और चीज एब्सोल्युटली. देखी है कि जहां पे भी किसी स्टेट में जो कि जिसके एक स्टैब्लिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डाउन हुई है और एक नॉन स्टेट एक्टर ने उसको गवर्न करने की कोशिश की है, वहां पे टेक्नोक्रेट वाली जो गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है वो हमेशा फेल हुआ है। चाहे हमने टूनिशिया एब्सोल्युटली. में देखा, चाहे हमने शुरू शुरू में लीबिया में देखा, इजिप्ट में भी देखा, जब अभी बांग्लादेश, अभी बांग्लादेश में एंड टेक्नोक्रेट. हाँ, सो तो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है कैन ओनली टू माय माइंड बी एन इंटरिम मेजर, because they are not representative of the people. They do not understand in full terms what it means to govern. They are specialists in their own field, but एक गवर्नेंस के लिए, एक लीडरशिप के लिए, एक
अलग तरह का वो रूप चाहिए होता है। तो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट कैन एट बेस्ट बी अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट। अभी एचटीएस ने अल बशीर को बोला है कि भाई 1 मार्च 2025 तक ये इंटरिम गवर्नमेंट चलेगी। ज्यादातर जो गवर्नमेंट में ऑफिसर्स थे, उनके जो मिनिस्टर्स थे, उनको उन्होंने रिटेन किया है कि भाई अगले 3 महीने तक कोई ऐसा अपसेट नहीं होना चाहिए कि कंट्री बिल्कुल ही क्योस में आ जाए। बट आगे आने वाले समय में देखना होगा कि किस प्रकार से कर पाते हैं। मेरे हिसाब से बहुत डिफिकल्ट है। यूनिटी गवर्नमेंट तो एक फॉर्मूला है जो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं होता कहीं पे। Absolutely, absolutely. I think I share these thoughts 100%. तो क्या ये कहना सही है कि असाद की जो फॉल है ये सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये बहुत अनसर्टनिटी जो है इस स्टेट में आ गई है ये कंट्री। तो और इंटरनेशनली हम सीरिया को, व्हाट विल बी द इंटरनेशनल कम्युनिटी बी इंटरेस्टेड इन? फ्रेगमेंटेड सीरिया with everybody having a pie, or a joint Syria? What will the international community prefer? When I talk about international community, I'm talking about the most influential countries like Israel or Jordan or Russia or USA. Or Turkey? What would they prefer? A fragmented with their own support, or a joint country? सो इसको भी आपको I शॉर्ट know टर्म और we'll लॉन्ग not टर्म में। discuss this, viewers. These are absolutely candid questions and candid thoughts, and I am grilling him on absolutely what we have discussed so far. Yeah, please, over to Kal Rajiv. या सो इसको भी हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में देखना पड़ेगा। इन दी शॉर्ट टर्म, टर्की एंड इजराइल आर वेरी वेरी हैप्पी, यूएस इज वेरी हैप्पी, you know, because they Turkey and Israel have been able to capture more territory and create buffer zone and safety for themselves. US is happy because Israel is happy, and Iran has been, you know, disconnected from its main route of supply to the proxy groups in Hezbollah, Hamas, etc. But in the long term, I don't think their happiness will be the same, because a fragmented nation, whether it is Syria or anybody, becomes a playground and free for all for anyone. And like I said, winner takes all. In a modern, world where we are governed by the rule of law and rules of engagement, a fragmented nation where winner takes all cannot be a long-term solution. It only creates instability within the state and in the region around it. And in the region around it means it can spread to in any direction in a concentric circle, and that cannot be a good solution for anyone in the region. So short term, Turkey, Israel, US, etc. will be very happy for having broken the link, taken out Assad, captured more territory. But I have my doubts whether in long term, they'll be able to retain this happiness and see their geopolitical and security goals fulfilled through a fragmented Syria. Okay, one last question before we start taking questions from the viewers. Kal Rajiv, I know it's going to be speculative, so I leave it to you. Who's responsible for this regime change? No, I mean, nobody is going to own it up, but it is very clear that it was pushed by Turkey from the north, and it had absolute support from the US and Israel. So it can be speculative because nothing is there in black and white, but it is Yeah, very that's why clear I when you asked. join the dot. That's why I asked you, because they are the one who are, and how come Russians probably permitted it, or I mean they just couldn't help it because of the various reasons, Iran being down and Israel being what it is. So Russia could not influence it. I think Russia was overstretched, and Yes. there was something of a tacit agreement also, because after the first 2 days of aerial strikes, with Russia tried to do it in Aleppo and Idlib to disperse the assault, there was absolute radio silence, and then things moved absolutely smoothly to take over a country without firing a shot, without any casualties, and people just laying down arms and welcoming you, sort of, or letting you go through, is very hard to swallow, that it could I, have happened I without a tacit understanding between number of players. एब्सोल्युटली आई एग्री, क्योंकि शायद वो टाइम असाद को बचाने में लगा रहा था कि किस तरह से मोडालिटीज आर बीइंग वर्कड आउट व्हाइल द फोर्सेस वर जस्ट वॉकिंग इनटू डमस्कस। आई थिंक उस Absolutely. टाइम पर ये And डिसाइड कर दिया गया था।
27th November, the assault started and the entire region woke up to it. And 28th November, I think Assad was in Moscow. Yes. So Yes. he would have told something, and he would have been told something, and that is how it all unfolded. I mean, it could not have happened without a very clear tacit understanding between number of players. Absolutely. So that is why it's a cause of this thing that even for our population, I think it's a cause of something which we need to think of कि कोई भी चीज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर गारंटेड नहीं होती है और किसी के लिए भी ये नहीं है कि आज अगर ऐसा है तो आगे फ्यूचर में भी ऐसे चलना है एंड एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है आर इकोनॉमी इज डूइंग वेल. So don't expect कि people are going to lay down, no restrictions on you and let you grow. हमारे यहाँ डीप स्टेट काम करेगी एंड वी हैव टू बी सो गुड कि या तो हम पहले से एंटिसिपेट कर लें कि हमारे अगेंस्ट क्या होने वाला है और उसके अगेंस्ट तैयार रहें, या अगर हम एंटिसिपेट नहीं कर पाते तो लेट्स टेक इट इन आवर स्ट्राइड एंड फाइट इट आउट. हम मेरे को समहाउ ये एक लगता है कि हम परेशान क्यों होते हैं कि यूएस से हमारे अगेंस्ट ऐसे कर रहा है, चाइना ने ये कर दिया. आई थिंक वी शुड बी कैपेबल. अगर आप ऊपर बढ़ रहे हैं तो आपके अगेंस्ट प्लॉट्स होंगे, आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज होंगी, आपके अगेंस्ट एस्पिनाज, सैबोटाज, सब कुछ होगा एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड. And this is a great example in what has happened in Syria. Nobody could think of it कि this is going to work out like this. In fact, जब तक सीरिया नहीं आया शायद बहुत से लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि रशिया और कि असाद asylum के लिए मॉस्को जाएगा. Look at this thing, a godless country and an Islamic country. I mean, how Russia is taking Iran along and how Russia is taking Syrian this thing along. So with that, I think Rajiv, we will take on the question. First question is from Manoj Singh. Ask Colonel, is Syria going the Iraq way where nobody knows who runs it? Yeah, so we have discussed this. I mean, right now it's a very uncertain situation, and it's a big challenge for Jolani and HTS how they can, firstly retain the territorial integrity of Syria, and then see that Syria does not go into chaotic situation like Iraq did after Saddam Hussein was assassinated. And this is nobody can say, but likelihood of Syria going in the way of chaos are more than likelihood of Syria stabilizing under HTS led government. Okay. His supplementary question is, here in India, we want our neighborhood stable so that we can grow. Doesn't Turkey, Israel, and other countries around Syria think in similar terms? Is unstable neighborhood good for them? Yeah, so I've answered this question already that in the short term, they are very happy that they have been able to destabilize Syria and they've been able to capture additional territory to create security and buffer zone. But in the long term, unstable neighborhood or a fragmented neighbor never good in the long term. Yeah. I think he's the one who's very active. Ask sir, do Syrians believe in their country and have nationalistic view like India? Or do they feel that they are artificial country created by Western powers? Very difficult to say, but yes, what I can say that Syria is a country which has been divided into ethnic group-wise segments and which have been trying to fight for their own control and own respect. And the biggest point was that Alawite majority, Alawite community, which is only 10 to 12% of population, was ruling them for almost 53 years, which has about 80% of Sunni population. So that was always a case, something akin to what Iraq was. So I would not say that they say that's an artificial nation. Yes, it has been carved out after the demise of the Ottoman Empire and the First World War. But to say that Syrian people don't feel that their country, is a nation and the boundaries are correctly defined, I'm not in a correct position to say that. Yeah. And these sort of situations are for the geopolitical advantage of a particular country. So most of this thing is that, their interest and versus local, और जब वो local भी एक दूसरे के fragment हो गए हैं, these are imposed, these situations are imposed from outside, and the nation की internal security और internal cohesion इतनी ज्यादा नहीं है. Again,
let's look at. Oh yeah, we got a question also on that. I think I was about to ask you this question, but Colonel Sharad Seth has asked you this question. What are the ramifications for India now? No, Or, you or, or, or for I'll add on. I'll add on to this that what should we learn from all this? absolutely. So, I was at the Army War College last week, and I was there delivering a talk on India's strategic neighborhood and especially the West Asia war. And there are a number of lessons that we have to have taken from both Syria as well as the war in Gaza. And the number one thing is what you and I understand very clearly, being from the military intelligence, is guard against complacency. Yes, Every time such kind of attacks takes place, it is always a question of intelligence failure. But when you investigate into why this intelligence failure took place, it tells you that there was a routine which was set, and every day the same inputs of same type were coming, and so they were marked as routine, and the community and the intelligence agencies did not give too much of focus to it, did not take it in the form of an operational input, and the adversary took advantage of that. So the most important lesson is, whether it is Syria, whether it is Hamas, or anywhere, you have to guard against complacency. Second is, you briefly mentioned it, that as India grows, you will have more and more people who will be envious of this growth, whether it is in the neighborhood or in the region or in the globe. Instead of trying to fight how your growth is being negated, or how the propaganda is being spread against you, I think best is to build and fight on your strength. My yes, understanding is, whether it is West Asia or our immediate neighborhood or the globe as such, there is never lack of space where you can make your own niche and growth, and make your own mark. Don't have to always fight against the space which has already been taken over by someone who is your adversary. absolutely. There is enough space for everyone to make a mark for itself. फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए. So now what Kal Rajiv, you had said a very important point, क्योंकि मेरा अपना भी experience having served in intelligence corps for more than 3 decades is, कभी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है जिसके बारे में आपको खबर नहीं थी, बट वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं. स्टेज तक रह गई. जब वो इंफॉर्मेशन स्टेज पे, इसलिए क्योंकि इट्स ए वेरी बोरिंग और रूटीन वर्क विच वी हैव टू गो थ्रू हंड्रेड्स ऑफ इंटरसेप्ट्स, hundreds of news reports. But now is the time that we have computers, we have big data analysis, we have artificial intelligence to work on. So efforts are in hand to combine all this, and human mind can forget a particular thing or overlook. एक बार अगर उसको ठीक से सिस्टम में हम इंजेस्ट कर देंगे तो शायद कंप्यूटर उसको नहीं भूलेगा. बट नॉट विथ स्टैंडिंग दैट, आफ्टर ऑल 9/11 हैपेंड, एंड जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो हर खबर थी, या हमारे केस में 26/11, कारगिल वॉर, Absolutely. हर जगह जब आप बाद में हाइंडसाइट में जब उसको देखते हैं तो हर जगह खबर होती है. It is only the analysis. It's not at the collection level that the failure is. It is at the Synthesis. analysis level. और हमको बार बार अपनी इंटेलिजेंस कम्युनिटी को ये याद दिलाना पड़ता है कि irrespective of how difficult it is to keep a tag of everything, please join dots और उसकी एक इंटेलिजेंस पिक्चर बनाई जाए. I think we've had a very good discussion, Karan Rajiv. It was absolutely candid views. I asked you questions which were not shared with you in earlier. So thank you very much. We wish to continue this podcast in coming days also. Thank you and Thank you. good night. Thank you. Thank you, everybody.